My name is Danish and I'm a professional video editor from last 3 years. I have completed 1000 plus projects for all of my clients. So in this video, I am going to teach you how to become a video editor in 2023. इन 5 steps को follow करते हुए आप लोग एक बेहतर video editor बन सकते हो 2023 के अंदर. So इस video को complete जरूर watch करना. So let's get into the video. Step 1. मोबाइल और कंप्यूटर. आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के लिए मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए या कंप्यूटर. So इसका आंसर है कंप्यूटर. Of course, the features that you get in computer softwares are not limited. You can do any kind of editing in computer softwares, but in mobile softwares the options are really limited. So I always recommend you to go for computer because computer की जो editing है वो मोबाइल से कहीं गुना बेहतर है और उसका मुकाबला नहीं कर सकते. लेकिन if you cannot afford computer, then मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं. बेहतरीन अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करें और मोबाइल से बेहतर वीडियो एडिट कर सकते हैं. देन वहाँ से कुछ पैसे कमाएं और अपना पीसी या लैपटॉप लें और वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करें. Step 2. Softwares. People ask me like which softwares are the best for video editing for the mobile and for the computer. So now I will tell you for the both computer and mobile softwares. So basically if we talk about the computer software, the number one is Adobe Premiere Pro, which is one of the best video editing software and I'm also using it from last 2 years. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. आजकल मूवीज भी प्रीमियर प्रो के अंदर एडिट हो रही हैं और जितनी भी कमर्शियल एड्स हैं सब की सब Adobe Premiere Pro के अंदर ही एडिट होती हैं. ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है अपना वीडियो एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करने के लिए. नंबर 2 इज DaVinci Resolve. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दिस इज ए फ्री सॉफ्टवेयर. मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो DaVinci Resolve इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. नंबर 3 इज Filmora. अगर आप लोगों के पास एक हैवी कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है देन आई विल रिकमेंड यू टू लर्न Filmora, which is basic but you can do editing by using your own creativity. This is the best software for the newbies especially. So now if we talk about the mobile softwares, number 1 is KineMaster, which is the best software that I have used when I started my video editing journey. Number 2 is CapCut, which is also one of the best video editing software. Number 3 is Power Director and number 4 is VN Video Editor. Step 3. Learning. This is the most askable question, like हम video editing सीखे कहाँ से? So I recommend you to learn video editing from YouTube. You can learn video editing from different channels. There are many channels that will teach you video editing from basic to advanced. लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि यार कोर्स कौन सा करें? यार पैसे आप लोगों ने जरूर लगाने हैं. आप लोग एक फ्री कोर्स कर सकते हैं Udemy पे जाके. अगर आप लोग पेड कोर्स भी करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग पेड कोर्स भी कर सकते हैं. I cannot tell you which course you should do because I never did a course in my life and I learned all the things from YouTube. So I also recommend you to learn all the things from YouTube because there are many channels that will teach you video editing from basic to advanced level. Number 4 is portfolio. After learning a video editing software, after learning many things about video editing, you should build a portfolio video in which you should introduce yourself, that which services you are providing, which kind of video editing you can do. You should do all of your effort in that video. इस वीडियो के अंदर जितनी आप लोग एफर्ट कर सकते हो करो, अपना सारा टाइम इस पे लगाओ क्योंकि यही ऐसी चीज है जिसने आप लोगों को क्लाइंट लाके देने हैं. अपने तमाम इफेक्ट्स इसमें ऐड करो, म्यूजिक ऐड करो, ग्राफिक्स ऐड करो और इस वीडियो को फुली एंगेजिंग बना दो. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेन योर क्लाइंट्स बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन. स्टेप 5. शोकेस योर पोर्टफोलियो. नाउ यू हैव अ पोर्टफोलियो video, so how you will show this video to your clients? This is the interesting question. You can use Google Drive. You can upload the video and send the link directly to your client. The client will be able to see the video. लेकिन दूसरी तरफ आप लोग YouTube भी यूज कर सकते हैं. YouTube पे आप लोग वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं. This is also very easy. So these were all the steps that you must follow to become a professional video editor in 2023. Now you have learned video editing, then go to Fiverr, Upwork, Guru, Freelancer.com and these kind of websites to sell your video editing services. And all these platforms has that great potential for video editing especially. So I recommend you to go and start your video editing journey. I hope you guys like the video. If you want more videos then subscribe to our YouTube channel. We'll meet you in the new video. Thanks for watching. Bye bye.